So, good morning, everyone. Today, we are going to see the next part of your chapter, social health. In the last session, already we discussed what are the excessive use of modern technology and communication media. What is the meaning of a selfie side, and what is meant by cybercrime. So, today in this session, we discuss about the which problems does the common man face due to the incidences of cybercrime. Explain the importance of good communication with others. So, what are the different ways to minimize the stress? What are laughter clubs? What are the importance of laughter clubs? And give us some examples of hobbies to reduce the stress and explain in detail unified movement against the tobacco. So, let's start today's session. So, we know that cybercrime is a criminal activity. It's done with the help of a computer and the internet. कल के सेशन में हमने यही डिस्कशन किया था। साइबर क्राइम एक ऐसी क्रिमिनल एक्टिविटी है किसके माध्यम से की जाती है बोलो तो विद द हेल्प ऑफ अ कंप्यूटर, सेलफोन एंड द इंटरनेट। सो आज के सेशन में हमें यही जान लेना है साइबर क्राइम का कॉमन मैन के ऊपर क्या इफेक्ट हो रहा है, वो किस तरह के प्रॉब्लम्स को क्या बोलो तो फेस कर रहे हैं। सो विच वेरियस प्रॉब्लम्स डज द कॉमन मैन फेस ड्यू टू द इंसिडेंसेस ऑफ साइबर क्राइम। साइबर क्राइम की वजह से आज कॉमन मैन कौन सी प्रॉब्लम को क्या वो फेस कर रहा है। सी नाउ द क्वेश्चन विच प्रॉब्लम्स which problems does the common man does the common man does the common man face due to incidences of cyber crime. You know, see. So, which problems does the common man face due to the incidences of a cyber crime, and if what are the effects of a cyber crime on the common man? तो कॉमन मैन के ऊपर साइबर क्राइम का क्या क्या इफेक्ट हो रहा है इसके बारे में हमें जान लेना है। सो लेट्स स्टार्ट। हैकिंग ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट institutes and the companies through the internet. So with the help of internet, hacking the information of government institutes and the companies. So इंटरनेट के माध्यम से गवर्नमेंट का जो ऑफिशियल इंफॉर्मेशन है उसको हैक करना, इंस्टीट्यूट को हैक करना और कंपनीज को क्या करना वो तो हैकिंग करना। सो विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट, हैकिंग द गवर्नमेंट इंफॉर्मेशन, institute information and the company's information. Now the first one effect is hacking information, hacking of information, hacking of information of government, institutes, government institutes and companies through the internet. Now next one, see. So teaching and financial exploitation of people through the social media. So with the help of social media, teaching and financial loss of people. जो फाइनेंशियल उसका एक्सप्लोटेशन हो रहा है वो किसकी वजह से, ड्यू टू द सोशल मीडिया। सो विद द हेल्प ऑफ सोशल मीडिया, टीचिंग एंड फाइनेंशियल एक्सप्लोटेशन ऑफ पीपल थ्रू द सोशल मीडिया। द नेक्स्ट वन इफेक्ट इज टीचिंग एंड financial exploitation
people through the social media, of the people through the social media, through the social media. So with the help of a social media, phishing and financial exploitation of people. The next one, see. So bank transaction carried out using a PIN without knowledge of a customer. So without knowledge of a customer, the bank transactions are carried with the help of a PIN code. So with the help of a PIN, so bank transaction carried bank transaction carried bank transaction carried out bank transaction carried out using PIN without the knowledge of customer, without the knowledge of customer. Now see, so without the knowledge of a customer, using the PIN, bank transaction are carried. So bank transaction carry किया जा रहा है तो किसके मदद से बोलो? So with the help of a PIN. Understand? The next one effect, now see, spreading unwanted messages, spreading unwanted messages, spreading unwanted messages or emails which can impair or lead to shutdown of mobiles and computers. Which can impair, lead to shutdown mobiles or computers. Let's see. Spreading unwanted messages or emails which can impel lead to the shutdown computers and the mobile. So unwanted messages send करना इसके और unwanted email send करना इसकी वजह से क्या होता है, अपना जो कंप्यूटर है सेल फोन को क्या करना है तो शट डाउन कर लेना. Next one, see, selling of inferior quality items than those shown on the shopping websites. Nowadays there are different kinds of the shopping websites are working. So such kind of shopping websites selling of inferior quality, they are not provide the good quality of materials. इंटरनेट के ऊपर जब हम ऑनलाइन शॉपिंग करते समय एक अच्छे क्वालिटी का मटेरियल हमें दिखाया जाता है और उसे हमें जो देते हैं वो क्या थोड़ा सा क्या रहता है, वो तो इम्प्योर रहता है. सेलिंग ऑफ इंफीरियर क्वालिटी आइटम्स देन दोज शोन ऑन द शॉपिंग वेबसाइट्स. जो शॉपिंग वेबसाइट के ऊपर जो मटेरियल रहता है वो हमें क्या हो तो नहीं मिल पाता. तो दिस आर द कॉमन प्रॉब्लम्स फेस ड्यू टू द साइबर क्राइम. तो इस तरह के एक कॉमन प्रॉब्लम्स क्या बोलते क्या है आजकल क्या बोलते में क्या है प्रॉब्लम्स क्या उसके बारे में ये. तो दिस आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ इफेक्ट्स ऑफ अ साइबर क्राइम ऑन द कॉमन मैन. तो कॉमन मैन के ऊपर क्या होता है ये सब प्रॉब्लम्स क्या है इफेक्ट हो रहे. फर्स्ट वन इज हैकिंग ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट एंड द कंपनीज थ्रू द इंटरनेट के माध्यम से गवर्नमेंट का जो इंफॉर्मेशन इसको क्या कर लेना, हैक कर लेना. फिशिंग एंड फाइनेंशियल एक्सप्लोजन with the help of social media, bank transaction without the knowledge of a customer. बैंक का ट्रांजेक्शन उसका पिन यूज करना without the knowledge of a customer, spreading unwanted messages or emails leading to the shutdown the computer and the mobiles or a cell phone. And last one, selling of inferior quality items than those shown on the online shopping. But these are the effects of a cyber crime of the common. Listen. Now the next one. Explain the importance of a good communication with others. So what are the importance of a good communication with others? So others के साथ जब हम अपना एक communication रखते हैं तो उसका हमें क्या महत्व है.
So what is the role of a good communication with the other? Now what are the importance? Now see, importance of good communication with others. Next one now, importance of good communication. Good communication with others. With others. So communication play a very important role in a human life. Understand? So with the help of communication, we can express our feelings. So communication के माध्यम से ही हम अपने फीलिंग्स को क्या हो तो एक्सप्रेस कर सकते हैं. So communication play very important role to maintain the social health in the society. तो हमारे सोसाइटी में जो हमारा सोशल हेल्थ मेंटेन करने का जो मेन रोल कौन करता है तो कम्युनिकेशन करता है. सो व्हाट आर द इम्पोर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन विद अदर्स. जब हम अदर के साथ कम्युनिकेशन करते हैं तो उसका क्या इम्पोर्टेंट है, ध्यान में रखिए. कम्युनिकेशन इज एक्सट्रीमली यूजफुल फॉर एक्सप्रेसिंग फीलिंग्स. डिफरेंट मेथड ऑफ एक्सप्रेशन इंक्लूड्स communicating with friends, colleagues, cousins, teachers, as well as our parents. So communication is extremely useful for expressing the feelings with our parents, with our friends, with our colleagues, with our cousins, with our parents, and with our teachers. So communication is extremely useful for expressing feelings. Communication is extremely useful for expressing feelings. So with the help of communication, we can express our feelings with different methods of expression. Includes communicating with friends, teachers, parents, and our friends. Expressing our feelings through the communication with the near and dear ones, noting down our feelings, etc. help us to relieve the stress now. When we express our feelings with near and dear ones at that time, noting down our feelings. Now see, so noting down our feelings help us to relieve the stress. And this helps us to relieve stress. Now see, expressing our feelings through the communication, for example our cell phone and internet, at that time we noting down our feelings, and this noting down feelings is very helps us to the investigation. जब हम किसी अपने नजदीक से वाले रिश्ते से या किसी दूर वाले रिश्ते के साथ जब बात करते समय जब उसको अगर हम नोट कर लेते हैं तो हमें किस लिए यूजफुल होता है, तो टू रिलीव द स्ट्रेस, to control the stress. Now see, communication also help us to spread knowledge and to build healthy relationship. Now see, communication help to spread knowledge communication also help us to spread knowledge and to build healthy relationship You know, see, so with the help of communication, spread the knowledge, and it's also play a very important role build the healthy relationship. When we communicate to our parents, our teachers, our friends, our colleagues, at that time we spread the knowledge and also to build the healthy relation.
जब हम कम्युनिकेशन किसके साथ करते हैं तो उसका सबसे बड़ा जो हमें बेनिफिट है वो किसने बोलते फॉर हेल्थी रिलेशनशिप। Understand? These are the importance of communication with the others. Nowadays it's a very important to reduce the stress. अगर हमारे स्ट्रेस को अगर हमें कम करना है so we must be communicate with our कलीग्स। अगर हमें कलीग्स हो, अपने फ्रेंड्स हो या अपने माता पिता हो या अपने नेबर्स उसके साथ हमें क्या करना है, कम्युनिकेशन करते रहना बहुत जरूरी है। अंडरस्टैंड? तो दीज आर द इम्पोर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन विथ द अदर्स। नेक्स्ट, so what are the various ways to stress the minimize? ध्यान में रखो, स्ट्रेस को हम किस तरह से मिनिमाइज करते हैं, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। So nowadays each and every people are now suffering from stress. आजकल हर एक इंसान क्या हो तो किसी न किसी स्ट्रेस से क्या कर रहा है, वो सफर कर रहा है। So how minimize the stress? तो स्ट्रेस को हम किस तरह से मिनिमाइज कर सकते हैं? So what are the various ways to minimize the stress? How minimize the stress? Yeah, various ways to minimize the stress. Now see, some of the ways to reduce the stress are as follows. Now see, there are some ways. So with the help of various ways, we minimize our stress. There are some ways with the help of ways we are minimize our stress. First one, maintaining good communication and expressing our feelings to our friends, peers, cousins, teachers, and parents, or noting them down in a diary. Now see, for minimize the stress, we maintain the communication with our parents, with our cousins, with our friends, with our peer groups, with our teachers, with our parents, and noting down in a diary. ध्यान में रखो, अगर हमें स्ट्रेस को कंट्रोल करना है, मिनिमाइज करना है, so you must be maintaining the communication with the other. First one also, maintaining good communication. Maintaining good communication. Maintaining good communication and express our feelings. And express our feelings. Now see, maintaining a good communication and expressing our feelings with your friends, teachers, or noting them down in a diary. जब हम अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं, उसको हमें अपने डायरी में क्या करना है, तो नोट करके रख लेना है। This now see, utilizing the free hours in fostering hobbies like material collection. Now see, utilize the free hours for collecting the different kinds of the materials: photography, reading, cooking, drawing, making a rangoli, and the dancing. Now see, utilizing the free time. Utilizing the free hours. Utilizing the free hours in hobbies like material collection, photography, reading, writing, drawing, making rangoli, cooking it is. Now see, utilizing the free hours in the hobbies like collection of different materials, photography, reading, writing, playing, dancing, and cooking. Next now see, laughing loudly so as to release stress. Now see, laughing loudly
laughing loudly, so as to relieve space. स्ट्रेस को हमें रिलीव करना है, उसको अगर कम करना है, so must be laugh loudly. Let's now see listening to music and singing. Listening to music and singing. Listening to music and singing. Now see next one, listening to music and singing. Playing sports, outdoors games. Yes or now? Playing sports and outdoor games. Playing sports and outdoor games. Regular exercising. Next now. Regular exercising. So these are the ways. So with the help of ways we minimize the space. तो इन ways के माध्यम से हम अपने स्ट्रेस को क्या कर सकते हैं, मिनिमाइज कर सकते हैं. So laughing loudly so as to relieve stress. लाफ करने से हमारा स्ट्रेस थोड़ा सा क्या हो जाएगा, रिलीफ हो जाएगा. लिसनिंग टू म्यूजिक एंड सिंगिंग, हमें क्या डिफरेंट प्रकार के म्यूजिक को सुनना है और क्या हमें गाते रहना है. प्लेइंग स्पोर्ट्स एंड आउटडोर गेम्स, हमें क्या स्पोर्ट्स में भाग लेना है और आउटडोर्स गेम में हमें क्या इन्वॉल्व हो जाना है. और लास्ट वन इज रेगुलर एक्सरसाइज. सो विद द हेल्प ऑफ दिस वेज टू मिनिमाइज द स्ट्रेस. तो इन स्टेप्स को यूज कर हमें क्या अपने स्ट्रेस को क्या कर सकते हैं, मिनिमाइज कर सकते हैं. So now understand how stress is minimized. So stress is minimized with the help of the following ways. Understand? Now next see. Next one now see. What are the laughter clubs? Next one now. What are laughter clubs? Next question now. Question number 4. What are laughter clubs? What are laughter clubs? Laughter clubs का मीनिंग क्या है, हम देखकर. The newly popularized concept wherein people come together in a public garden, a public place, park, and laugh loudly for a fixed time duration to relieve the stress is called as the laughter club. ध्यान में रखो. So laughter club is a newly popularized concept wherein a number of people are come together in a fixed time and laugh loudly to relieve the stress is called as the laughter club. laughter club का मीन्स क्या एक फिक्स प्लेस के ऊपर फिक्स टाइम में बहुत सारे लोग एक साथ जमा हो जाना और एक साथ हंसना, किस लिए to reduce the stress is called as the laughter club. So laughter club is a newly popularized concept wherein number of people are come together, laugh together in a fixed time to reduce the stress is called as the laughter club. Write down now, say the newly popularized concept wherein people come together in a public place like park or garden, and laugh loudly for a fixed time duration
to relieve stress, to relieve mental stress, to relieve mental stress, to relieve mental stress. Is known as laughter club. You know, see. So, what is the meaning of laughter club? A newly popularized concept wherein people come together in a public park or a garden and laugh loudly for a fixed time duration relieve the mental stress is called as the laughter club. बहुत सारे लोग एक साथ जमा हो जाना, एक साथ हंसना एक फिक्स टाइम में, किस लिए? अपने मेंटल स्ट्रेस को कम करने के लिए, उसको हमें क्या कहना है? वो तो laughter club कहना. Understand? Next one, see. Unified movement against the tobacco. Unified movements against the tobacco. Unified movements against the tobacco. Unified movements against tobacco. Now see, the unified movements against tobacco was started by 45 various well-known organizations. Now see, so unified movements against tobacco started by 45 various well-known organizations such as WHO. Started by 45 various well-known 45 various well-known organizations such as WHO, Tata Trust, etc. Now see, fight against the tobacco and control the chewing of tobacco in a society. So nearby 45 various well-known organizations such as WHO and Tata Trust are working on the fight against the tobacco addiction. This movement has been active against the consumption of tobacco and provides guidance to activities against the tobacco addiction. Now see, so this movement has been active against the consumption of tobacco. So what is the main rule of unified movements on the tobacco? This movement has been active against the consumption of tobacco. So these movements play a very important role active against the consumption of tobacco and provide guidance to the activists against the tobacco addiction. तो tobacco का जो एडिक्शन पीपल में रहता है उसको कंट्रोल करने के लिए, उसको फाइट करने के लिए क्या बोलते हो, यूनिफाइड मूवमेंट्स प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल. Now see the next one is the Salam Mumbai Foundation. Next one is the Salam Mumbai Foundation. Next one now see Salam Mumbai Foundation. Salam Mumbai Foundation. Salam Mumbai Foundation.
Now see, what is the role of Salam Mumbai Foundation? Now see, Salam Mumbai Foundation is an organization which runs programs in the various school to empower the slum children in the field of education. The Salam Mumbai Foundation play an important role in the empower of slum children in the field of education, sports, and business by helping them to improve their health and the lifestyle. To improve the health and the lifestyle from the slum children, Salam मुंबई फाउंडेशन प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल. इस्लाम मुंबई फाउंडेशन का जो मेन रोल है टू इम्प्रूव द लाइफ स्टाइल ऑफ द स्लम चिल्ड्रन इन एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स. जो गरीब लोग रहते हैं स्लम एरिया में जो रहने वाले लोग रहते हैं उनका एजुकेशन दर्जा बढ़ाना, उनको एक अच्छी लाइफ स्टाइल देने का काम कौन कर रहा है बोलो तो सलाम मुंबई फाउंडेशन. दिस ऑर्गेनाइजेशन हैज आल्सो बीन वर्किंग विद various school in urban and the rural areas. Now see, Islam Mumbai Foundation play very important role in the school belongs to the rural area in the urban areas, making the society tobacco free since 2002. This Islam Mumbai Foundation play very important role making a society free, society tobacco free, society tobacco free from since 2002. 2002 से वो आज तक क्या बोलो तो टोबैको फ्री करने का काम क्या है इस्लाम मुंबई फाउंडेशन कर रही है. Now see, and has been successful in making some district in Maharashtra completely tobacco free. So Islam Mumbai Foundation making some district in Maharashtra फ्री फ्रॉम टोबैको. तो कुछ डिस्ट्रिक्ट जो महाराष्ट्र के हैं वो टोबैको कंजप्शन से क्या बोलते तो फ्री हो चुके हैं विद द हेल्प ऑफ द सलाम मुंबई फाउंडेशन. नाउ सी, इट हैज कंप्लीटेड दिस प्रोग्राम इन अबाउट 200 स्कूल. नाउ सी, तो सलाम मुंबई फाउंडेशन कंप्लीट द प्रोग्राम इन 200 स्कूल्स. 200 स्कूल्स में वो अपना क्या बोलते प्रोग्राम को क्या है फिनिश कर चुके हैं इन मुंबई एंड 40,000 still in the rest of the Maharashtra with the help of the government. So with the help of the government, nearby 14,000 schools in the rest of Maharashtra. तो महाराष्ट्र में नियरबाई 14,000 स्कूल में ये प्रोग्राम क्या बोलो तो कंप्लीट हो चुका है. सो नियरबाई 14,000 स्कूल्स, नियरबाई 14,000 स्कूल है वो इस्लाम मुंबई फाउंडेशन के माध्यम से क्या बोलो तो इम्प्रूव हो चुके हैं. दिस इज द एंड ऑफ आवर चैप्टर. इस तरह से अपना लेसन क्या हो तो फिनिश हो चुका है लेसन. सो इन दिस सेशन वी ऑलरेडी डिस्कस्ड which problem facing the common peoples due to the cyber crime, what are the importance of good communication with mother, how minimize the stress, and what is the role of laughter club to minimize the mental stress, and what is the role of different organization to control the consumption of tobacco in society, what is the main function of Salam Mumbai Foundation in a slum area in Mumbai in Maharashtra, and what is the main function of communication. तो उस तरह से आज अपना चैप्टर क्या है कंप्लीट हो चुका है. सो टुडे स्टॉप हियर, विल बी कंटिन्यू ऑन द नेक्स्ट सेशन.